Good morning, students. How are you? I am hoping that you are all fit and fine. Without any delay, let's start our next page in the topic Mangoes Around the Year. We are doing our chapter Mangoes Around the Year. In this chapter, we have discussed about the friends, their food, how is the food spoiled, and what is the food wasted. Then BG, why did BG return the bread packet? How can we find out that bread or any food item is spoiled? What may be the symptoms? Next, there was an activity for you. I hope you are doing at home. Now, today we will discuss about methods of preservation of food. How can we stop? How can we make the food to be in good condition for more time? Here is a table food items and methods how these food items can be kept for a long time. If we see milk is spoiled after 1 2 days, but if we use some methods we can keep the milk fresh for 3 4 days or more than 1 2 days. Same as cooked rice or we have maiden food. Green coriander means we can say that leafy vegetables, onion, garlic, or any other vegetables. Let's see milk. How can we make milk to be in good condition? Boil it. We can boil milk so that the boiled milk can be kept for a long time, means more than 1 days, because boiling kills the germs, bacteria and fungus and other harmful substances in the milk, and the milk will remain safe. Next, cooked rice. How can we keep cooked rice for a long time? Means more than 1 day. We can put in a bowl and keep the bowl into a container with some water. We have to take one container. In that we will put our rice, and this bowl we will put in another bowl or container which have water which have water. This is water, and rice, and this is water. In this way we can keep the cooked rice for a long time. Next, green coriander or dhania pata. When our father or mother go to market to bring vegetable, they also bring dhania, coriander leaves. How can we keep them? If we don't keep them, they will dry up or they will be spoiled. How can we keep them? We can keep them in a damp cloth. We can wrap
Suppose these are dhania patta. We have to take a paper or a cloth, just sprinkle some water on it, make it wet, and roll the coriander in this cloth, or you can take a newspaper. In this way we can keep the coriander leaves for more time fresh. Second, next, onion or garlic. Onion or garlic. In same way, we can keep onion or garlic for a long time. How can we keep them? We can keep them in dry and open place. You have seen in your kitchen when your mother keep the onion or garlic in open place, they remain fresh and they do not spoil soon. They can be kept for even months. If we pack them, then they will be rotten, they will be spoiled soon. I hope you have understand this. Now next is Mamidi Tandra. There is a story of making Mamidi Tandra. Let's first find out what it is. Mamidi Tandra is a you can say papad. You know papad? Yes, very crunchy and salty, sour taste. Yes. Mamidi Tandra, it is a dish which is used as a sweet for long time in our southern India. How it is made? Let's find out by this story. Chitti Babu and Chinna Babu live in Atrayapuram town in Andhra Pradesh. Now you have got the idea where is the Mamidi Tandra is made. It is made in Andhra Pradesh. Yes. Chitti Babu and Chinna Babu live in Atrayapuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden. The two brothers or other children play in the mango garden when they have holidays. When the trees are full of fruits, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. Like us, we also like kacha aam. Like us, they also like the unripe mangoes with salt and chili powder. At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kinds of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. Now see here, mangoes. Mangoes spoil in 3-4 days when we bring in our home. But when we make something different from these mangoes, we can use them for a long time, like pickles. You have eaten pickles. In pickles we make from different things. Bitter gourd we make carrot, we make from mangoes, we make from lemon, chili. There are so many things we make pickles. Next,
One evening, while having food, Chinnababu asked, Amma, we have so many mangoes. Make some Mamidi Tandra Aam Papad. What is Mamidi Tandra? Aam Papad. From them. When all the family was eating food in the evening, they were discussing that the children asked their mother to make Mamidi Tandra. Their father said, making Mamidi Tandra needs 4 weeks of hard work. Their father told them, if we will make that Aam Papad or Mamadi Tandra, we have to hard work. We have to do hard work for 4 weeks, means 1 month. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mamadi Tandra. Now you can see in this picture the family, the boys are playing in the trees. There is a father and the two son, and the next picture there the mango is being squeezed, means इसका पल्प निकाला जा रहा है, अभी इसको स्क्वीज किया जा रहा है, जूस निकाला जा रहा है इसका. Next in picture 4, this is fourth picture. In this picture they are spreading the mango pulp on a frame, and the next picture they are enjoying the papad. Let's see next. Both of the brothers first their father told that if the both boys will help, they will make the Mamidi Tandra. Both the brothers quickly agreed to help. Listening this, if we will help, they will make something for us. We will also help. हम भी तैयार हो जाएंगे जब हमारे मम्मी पापा कहेंगे कि भाई तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज़ बना के देंगे अगर तुम हेल्प करोगे तो. वैसे ही दोनों भाई तैयार हो गए. The next day both the children went to the market with their father. और अगले ही दिन दोनों के दोनों भाई अपने पापा के साथ मार्केट में चले गए. They bought a mat woven from the leaves of palm tree. पाम ट्री के पत्तों से बना हुआ एक मैट चटाई होती है, हाँ, उससे बनी हुई एक चटाई लेके आए घर पे. पाम ताड़ एक बड़ा सा पेड़ होता है, मैं तुम्हें पिक्चर भेज दूंगा बाद में. बड़ा सा लंबा सा पेड़ होता है जिसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं. पोल्स ऑफ कैसोरिना ट्री जो होता है पेड़ होता है, उसके तने से पोल बनाए जाते हैं, खूंटे बनाए जाते हैं. स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, जो नारियल होता है, जब नारियल से हम गिरी और पानी निकाल लेते हैं, उसके बाहर जो बहुत सारे बाल होते हैं, उन बालों से बनाई जाती है रस्सी, धागे. सम जैगरी तुम्हें पता है, गुड़ एंड शुगर. These things we need to make Mamidi Tandra. Next, what are they saying? That Amma found a sunny place in the backyard. उनके घर के पीछे वही खुली जगह थी, वहाँ पर मम्मी ने क्या किया, उनकी जगह ढूंढ ली जहाँ पे सनी मीन्स सूरज की रोशनी आए. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform. दोनों भाइयों ने क्या किया, खूंटे गाड़ दिए जहाँ पर उनकी मम्मी ने सिलेक्ट की थी जगह, जैसे हमारी चारपाई होती है ठीक इसी तरह से, और इनको आपस में बांध दिया.
ठीक है। और इसके ऊपर इन्होंने लगा दी वो मैट, जैसे कि चारपाई के ऊपर हम बिस्तर लगाते हैं इस तरह से, और बांध दिया किससे, कोकोनट हस्क की बनी हुई रस्सियों से। ओके नेक्स्ट, द they spread out and tied the mat on that platform. The next day appa chose the most ripe mangoes. अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए जो आम थे वो चूज़ कर लिए। भाई जो आम खरीद के लाए थे उसमें से, जो उन्होंने बाग में से तोड़े थे अपने, उनमें से they took out the mango pulp into a large pot. Now you can see in this picture they are squeezing the mango pulp in a big pot, in a big vessel. Same thing, उन्होंने भी ऐसे ही किया। जो मैंगो थे, जो पके हुए आम थे, उनका रस निकाल लिया एक बड़े से बर्तन में। Then they strained the pulp through a fine muslin cloth. फिर उन्होंने एक बिल्कुल भारी, जो बारीक कपड़े में से उस जूस को छान लिया, जैसे हम दूध को छानते हैं कहीं उसमें से गंदगी अलग करने के लिए, है ना। इसी तरह उस मैंगो जूस को, उस पल्प को छान लिया उन्होंने। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, ताकि उस पल्प में से वो जो निचोड़ा था उसमें से रेशे निकल आए। क्योंकि तुमने देखा होगा देयर आर सो मेनी फाइबर इन द मैंगो पल्प। आम जब हम खाते हैं तो हमारे दांतों में धागे से रह जाते हैं, उनको अलग करने के लिए उन्होंने छान लिया था। द चित्ती बाबू चित्ती बाबू क्रश द गुड़ जैगरी टिल देयर वर नो लम्प्स। अब चित्ती बाबू ने क्या किया, जो गुड़ था उसको इतना बारीक कर दिया ताकि उसमें कोई गांठें ना रहे, बिल्कुल बारीक कर दिया था, पीस दिया था उसको, मसल दिया था। दे एडिड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स। अब उन्होंने क्या किया, जो गुड़ और चीनी थी उनको बराबर मात्रा में मिला दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा भाई, वाई डिड दे एड जैगरी एंड शुगर। अब क्योंकि दोनों मीठे होते हैं तो दोनों को मिलाने की ज़रूरत क्या थी, ये भी हम पता करेंगे। टू द पल्प, उस पल्प में मिला दिया है। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद ए बिग स्पून। अब चिन्ना भाई जो दूसरा भाई था चिन्ना बाबू, उसने बड़े से एक चम्मच से उन सभी को आपस में मिला दिया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू ए थिन लेयर ओवर द मैट। अब मम्मी ने क्या किया, अब यहाँ देखो पिक्चर में, ये यहाँ पे इसके ऊपर जो मैट बिछाया था पत्तों का, उसके ऊपर वो इस पल्प को, इस मिक्सचर को डाल रहे हैं। यू कैन सी क्लियरली दे आर पोरिंग द मिक्सचर। भाई इस मिक्सचर को वो इस मैट के ऊपर डाल रहे हैं और बिल्कुल बारीक परत बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। अब ये जो लेयर उन्होंने बनाई थी, ये परत एक बिछाई थी जैसे कागज़ की होती है, वैसे उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद ए क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। और तुम्हें पता है भाई, खुली कोई चीज़ होगी तो उसके ऊपर डस्ट तो आएगी, तो उस डस्ट को दूर रखने के लिए उन्होंने एक कपड़े से शाम को उसे ढक दिया। The next day they again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. अब यहाँ पे अगले दिन भी उन्होंने यही काम किया, पल्प लिया, उसमें गुड़ और जैगरी मिक्स की और इस मिक्सर को वो जो पिछले दिन जो लेयर बनाई थी उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया। मीन्स एक और लेयर आ गई, अब लेयर हो गई दो। जैसे हमारी नोटबुक में एक पेज के ऊपर एक पेज होता है, इसी तरह से। देन दे स्प्रेड दिस वर्क वाज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। अब ये सारा काम किसको दिया गया था, दोनों भाइयों को।
Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks, they hoped that it would not rain. अब भाई क्योंकि 1 महीने का टाइम लगता है इसको, तो साउथ में भाई बारिश अपने से कुछ ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो भाई वो सोच रहे थे, वो आशा उम्मीद कर रहे थे भाई कि इस दौरान बारिश ना हो। क्यों? अगर बारिश हो गई तो हाँ, द मिक्सचर विल बी स्पॉइल्ड, इट विल बी mixed with water and will be spoiled, and their all hard work will be gone. For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick. Now you see, to make the jelly up to 4 centimeters, it took 1 month. How much work, how much hard work they have to do, and looked like golden cake, और जब तक ना दिखाई दिया जैसे सुनहरा केक. After some days, Amma said, the Mamdi Tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow. भाई उसके बाद अम्मा ने क्या कहा, 1 महीना गुजर गया, उसके बाद सब कुछ सूख गया था। उसके बाद मम्मी ने क्या कहा, भाई हमारा जो ममड़ी तंद्रा है वो तैयार है, और अब हम इसको निकाल लेंगे, उतार लेंगे जो मैट बिछाया था उसके ऊपर से, और उसके बाद कल हम इसको टुकड़ों में काट लेंगे। भाई तुमने भी देखा होगा जो गुड़ की चिक्की आती है अपने मार्केट में, वो भी स्क्वायर या फिर राउंड में आती है, वैसे ही वो लोग भी काटते हैं इसको। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रोट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. Mamidi Tandra was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." Now the children were very happy. भाई बच्चे तो खुश होंगे, भाई हम लोग तो खुश होंगे जब हमें कोई टेस्टी चीज़ मिलेगी। तो वैसे ही चिन्ना बाबू और उसका भाई था, दोनों खुश हो जाते हैं। क्या कह के, भाई हमने भी तो ये बनाया है। चलिए हम शायद अभी आपको समझ में आ चुका होगा। इसके ऊपर एक वीडियो, कुछ पिक्चर्स हैं, मैं डाल दूंगा उस पर, ठीक है, उसको चेकआउट कर लेना। और यू आर फ्री टू आस्क एंड टू लर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? Because sugar works as an preservative. शुगर जो चीनी है एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम आती है, चीज़ को ख़राब नहीं होने देती जल्दी से। प्रिजर्वेटिव होते ही मिलाए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं किसी भी चीज़ में, ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड द सन. अच्छा, अब जैगरी क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि भाई जैगरी में एक खास गुण होता है, एक क्वालिटी होती है भाई, इट इज़ स्वीट बट इट इज़ नेचुरल एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट ईजिली. भाई तुमने सुना होगा गांव में, अपने घरों में आसपास कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं भाई खाने के बाद गुड़ खाया करो। इसका कारण यही है, दिस इज़ द मेन रीज़न दैट द जैगरी और गुड़ हेल्प्स टू डाइजेस्ट ईजिली and keeps our digestive system healthy. Why did one more thing, dried in sun, so that the water or the moist will be dried in the sun. Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the Mamdi Tandra? Because the most ripened mangoes has a great taste and it have more pulp. It have more pulp than unripe mangoes. How did the brothers make the Mamdi Tandra? Write down step by step what they did show this. Now this will be a report. You have to write
The process of making Mamidi Tandra step by step. Number 1, number 2, number 3. First they have to collect the materials like casuarina poles, yes, coconut husk rope, ripened mango, jaggery, good, sugar, these things. Second, they have to mix good and sugar and mango pulp in the mango pulp. After squeezing the mango, then they have to we have to put spread out on the platform the mixture, and we have to wait till it dries. Like that you have to make different points. How did the brothers this हो गए? You have to write in your own sentences. अपने शब्दों में लिखना है भाई. What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? अब हमारे घरों में क्या क्या बनाया जाता है पके हुए बिना पके हुए मीन्स कच्चे आमों से. We make mango juice, yes, we make mango shake from ripened mango, we make चटनी, चटनी भी बनाते हैं हम कच्चे आम से. वी मेक पिकल्स, यस, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे घर में बनाई जाती हैं. तो दीज थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट you know about and share with your friends. So, we have discussed earlier there are so many types of pickles. Pickles made of carrot, made of lemon, pickle made of chili, pickle made of bitter gourd, and so many things. Find out and discuss. Is there any kind of pickle made in your house? In your house there is any pickle? If yes, then you have to note what kind of pickle it is it. In my house I have chili pickle and that amla pickle. Same thing, you have pickles, you have to write down who makes it. In my house my mother makes and I also purchase. In your house who makes? From whom did they learn to make the pickle? My mother learned this from her mother. And how you make? You have to write from where they learned. What all things are needed to make any type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. This will be your project. The process of making a pickle. How are these things made in your house? Papad. First, in my house, we make papad using urad dal. We make it wet for a night. In the next day, we grind it well, make a paste. Then we make a mixture of using different spices like chili powder, like cardamom, like salt, and we make a mixture, and then we make like small rotis, chapatis, round shape, flatten them and make them dry in the sun. In this way we make papad. Chutney, we make chutney by grinding different things with chili and salt, tomato, pudina, onion, etc. Badiya and sauce, like these things you have to note down. It is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata. Pune in Maharashtra and Kolkata in West Bengal. One is in west and one is in east direction of our
India. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? Oh, it will take 2 3 days. So we will take the things which may stay for 2 3 days, will not spoil for 2 3 days, like paratha, chapati, curd, some papad, achar means pickle, etc. How would you pack them? We will pack them in neat and tidy way so that no air will be reach there. If if there will be air in the pickle, it will be spoiled. If the air will enter to the paratha, it will be spoiled. In this way we will pack them. Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? We will eat first roti means chapati, paratha, curd, and then we will eat fruits, then some other packed foods. It may be chips, it may be papad, etc. We have learned glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Because if there will be any moisture or wet area or drop of water, the pickles will be spoiled. We need no water in the pickle. If we have any quantity of water, the pickle will be spoiled. Do you remember what happened in the bread in the experiment? This experiment we will discuss on Monday. Till then, you have completed your experiment. To eat mangoes around the year, we make different items like pickle, papad, chutney, chikki, etc. List some other food which are make different things so that we can enjoy it throughout the year. In your house, you can discuss so many things are made by your mother, your grandmother to be usable for long time. So this was our chapter. I hope you have understood this. If you have any doubt, you can ask me anytime. We will meet for an exercise for in our next period, next day. Till then, do your work, help your parents, be healthy, and bye.